जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वो है सबा जी साडे लिए भी कोई रोल छोड़ दे। आप क्या कर रही हैं? I know she's in every drama. No, but she's doing such a good job in each of them. I mean, how she, because she's in that Noor Jahan house with, and she's being such a different human being in this one. And in the last episode में जो सुन मेरे दिल में, उसमें भी she's a good mother. You know, she's a light-hearted person. इसमें she's not a very light-hearted person, but she's a very good woman. And oof, it's just amazing to see her in so much, and you know, suddenly this is, and yet she's so different in all of it. तो मैं यही कह रही हूँ कि हमारे लिए भी कुछ छोड़ ले. मरीना जी. So I think these two episodes definitely were better than the initial episodes. और कहानी जो है देखिए, I think the story has some dum in it. एक तो characters इतने हैं, फिर each character का क्या connection है story के साथ. अभी तक सिर्फ जो I think उसकी जो बीवी है बाबर की बीवी, उसका कोई connection नहीं है. She's just the second wife and she has a son and she's very upset कि ये लड़की इनके घर में आ गई है. But otherwise, if you look at it as a whole drama, it has a soapish feel because of the multitudes of characters in it. But these episodes were interesting. Suddenly, you know, tables totally turn. और ये लड़की दोबारा फंस जाती है बेचारी. पहले एक घर से निकली, फिर दूसरे घर में आई और अब तीसरे घर में चली गई. But जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वो है सबा जी साडे लिए भी कोई रोल छोड़ दे. आप क्या कर रही हैं? I know she's in every drama. No, but she's doing such a good job in each of them. I mean, how she, because she's in that Noor Jahan house with, and she's being such a different human being in this one. And in the last episode में जो सुन मेरे दिल में, उसमें भी she's a good mother. You know, she's a light-hearted person. इसमें she's not a very light-hearted person, but she's a very good woman. And oof, it's just amazing to see her in so much, and you know, suddenly this is, and yet she's so different in all of it. तो मैं यही कह रही हूँ कि हमारे लिए भी कुछ छोड़ ले. But loving your work. Love her positivity. I love her character the best so far. I'm really enjoying her character. How she accepts that girl, and you know, and जहाँ end हुआ है वहाँ मैं ज़रा झटका लगा है मुझे. मैं नहीं चाहती कि इनके साथ कुछ हो. मुझे पता है शजीना के साथ क्या होने वाला है, लेकिन इनके साथ कुछ ना हो. But you know, I think so. In my mind, मैंने जो guess किया हुआ है, I don't actually know. ये तार को ना छेड़े. Nobody knows, हाँ? ये तार ना छेड़े नादिया के साथ. But one thumbs up. चले. So I think this is a classic case of lost in translation because I think कहानी बुरी नहीं है. कहानी is जो मुझे लगा इसमें कि it's about this one girl और उसकी चॉइस से नहीं. वो सबसे पहले बाप ने उसको शन किया. She grew up in her stepfather's house. माँ मर गई. stepfather ने कहा तुम यहाँ नहीं रह सकती. उसको फेंक दिया वापस बाप के पास. उस घर में सवाए दादा दादी के कोई नहीं उसको चाहता और ये लड़का चाहता है. वहाँ से उसको दोबारा फेंक दिया एक और घर पे. और अब वहाँ से then she is thrown out of that house into. Now here is it's her story about a woman and how helpless a woman can be. कि वो जब पॉइंट वहाँ पे आया डाइवोर्स का, तो आप सोचे कि अब कहाँ जाएगी ये. She can't go back to her father's house because no one wants her there. She can't go back to her stepfather's house because he says you can't stay here. She can't be here. उसने obviously education या जो भी है, she's got nothing that is hers. ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके, she's got nothing. So when you look at it from that point of view, but she got stylist. It's very interesting. But because of the stylist and the stylization in which direction comes into it, the way it's been shot, ये message ख़त्म हो रहा है और आप believe नहीं कर रहे हो situation को. Otherwise,
it's a very traumatic हाँ मैं ये कहता हूँ यही स्टोरी situation. आप सखर में ले जाएं, ठीक है? नहीं सखर इधर भी भी नहीं, इधर भी अगर आप करें, आप इधर करें लेकिन रियलिस्टिकली करें ना. देखिं when you have overly made up people. हाँ, this is ये not कि वो like writing. they should look How that are we part. writing right No, now? that's Writing. what I'm saying. Direction is lost in translation. Is, na? हाँ, The writing so- is absolute. अच्छा, I ठीक think है, is good. सही. I think the writing is fine because I like Usama's character. He's an interesting boy. उसको शुरू में ज़रा सा विलेनिश दिखाए लेकिन he is not. He's a soft-hearted guy and I have a feeling इन दोनों का एक आपस में I think villain ये बनेगा, अदील बनेगा. But I think the writing is not bad. I don't think it's because देखिए अगर आप दादा दादी को भी देखें हम and if you look at old PTV dramas उसमें हमेशा there used to be an older couple that were constantly bickering and all that and it used to look really cute. But again, how do you portray it? Who is this dadi who's decked up all the time? Dada is very good. I think he's doing his part with the sunne ka and all that. I just feel that it's just lost in translation. Plus Adeel का और इस लड़की का एकदम से रोमांटिक वो डेवलप करना वो मीनिंग कहाँ से कैसे अब्यूसिव इंसान को देखेंगे आप हाँ, उसके साथ करेंगे. चलो अब्यूसिव भी ना हो लेकिन आपके पास टाइम कहाँ था. आप तो अपने कमरे में बैठी रहती हैं या आप डांट खा रही होती हैं. वो कैसे था. फिर दो एक औरत इसके साथ बुरी हुई फिर दूसरी औरत इसके साथ और फिर आई थिंक इसके अंदर ना कजन भी एक बुरी होनी शुरू हो गई. मासूमा रहती होगी. उसने कहा अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है मैं इनके बेटा फंसा लेती हूँ. हाँ ये हो सकता है. फिर मैं every woman in that house is now against her. First it was the puppo, then it was what's his name, and then the cousin also. And why will the cousin suddenly go against her? और मैंने सब लोगों को पता है कि जो तहरीम का कैरेक्टर है तहरीम बनी है ना जो पुप्पो है वो ईवल है. सबको पता है. सब उसको सुनाती रहती है कि तुम यहाँ पे आग ना लगाओ. नहीं अगर पता भी ना हो तो it's obvious she says horrible things हाँ. and no one shuts her up. हाँ. She says the most horrible things to people. और फिर वो सबा हमीद को कौन समझ आता है. बच्चे खुद चली जाए होटल मिलने खुद नहीं गई. बहुत मीन वर्ड्स हैं फॉर हर. बहुत मीन माँ के लिए बहुत ही मीन से too disgusting. इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इन योर फेस. I feel that that part of it isn't. But if you just look at her character, it's a very sad character. But unfortunately, you don't feel sad for ये her. बात. That's the point. जो कि उष्णा का कैरेक्टर है. हाँ ये मसला ये It's a है. scale. ये मरीना जी ने बता दी. I mean, again, put yourself in her shoes. What is she going to do? It's a dreadful situation to be in. So I think the story is not bad, and it's moving. It's just that it needs to be less stylized. Get into the character, please. That's Numbers. So I'll give it a 7 for the 7. हाँ. I think मेरा आपसे सवाल है राइटिंग पे ही. क्या वो सिचुएशन है जहाँ पे वो उन्होंने इतना बड़ा हवा Sorry, बनाया? the gun, absolutely bakwas. Rubbish. मरीना जी. So I think the शादी वाला scene जो था with all the characters, I think it was well shot and it was well edited. So you get the feeling of the tension जो हो रहा है. लेकिन gun, I couldn't understand that. The point is कि आपने इस लड़के को जो मैंने शुरू दिन से कहा था कि माँ बाप के सामने भी वो बहन को इतनी गालियाँ देता है, इतनी बदतमीजी करता है, तो माँ बाप ने थप्पड़ मारे उसे क्या तुम्हारा इससे क्या है, मेरी बेटी है, you shut up. And to pull a gun out of your system, I mean, and no one is saying anything. Everyone is standing there. That to me made no sense. No sense at all. जैसे बतीका जी ने कहा कि ये 80s के इरा में ऐसी कोई चीज़ होती बिलीवेबल हो जाता. मैं वही कहता कि ये मुझे शहर की सेटिंग में जो कि दिखाया हुआ DHA कराची में रहने वाले लोग हैं, हो सकता है वो मुझे बिलीवेबल नहीं है. ये सब लोग पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, किस तरह की हरकतें. ये बिल्कुल हो सकता है कि ये शहर की ये गांव की सेटिंग में गांव हवेली ले जाते हैं. मतलब अमीर लोग हैं, उनके ज़मीनों पे आपस में दो. इसका क्या नाम है गैर. हाँ इसका अच्छी सेटिंग भी गलत है. सेटिंग गलत है. मुझे सेटिंग नहीं समझ आ रही कि ये इवन अगर आप इसको लोअर मिडिल क्लास दिखाते हैं ना तब भी आपका ये सेंस बनता है बिकॉज उसमें ये सारा गैरत और जज्बाती और so many things because you hardly लोअर मिडिल क्लास में भी गन्स नहीं होते हैं. गन्स होती हैं हमारे नॉर्मली जैसे गांव के इलाके होते हैं वहाँ पे लोगों ने गन्स रखी हुई होती हैं. कैरी द गन. तो वो है कि भाई हर वक्त गन निकाल देता है. जज्बाती लोग होते हैं. यहाँ आपने अदील को एक पढ़ा लिखा लड़का दिखाया है. अगर आपने बट ही इज अ डेंजरस बॉय. पुट हिम इन अ ब्लडी लॉकअप. आर यू मैड? दिस इज द वे. और आप उसको हीरो दिखा रहे हैं. किसी को मोहब्बत होगी उसको देख के. नहीं हीरो तो खैर आई थिंक दूसरा लड़का बनेगा बट स्टिल इट वाज रिडिकुलस बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट वाज वेल डायरेक्टेड एंड यू गॉट द फील फॉर इट. आई थिंक इन दोनों के सीन्स क्यूट थे जब फ्लैट में आए हैं. बिलीवेबिलिटी फैक्टर अनफॉर्चुनेटली
is out of the window because of, again, the stylization. But I thought a good relationship between them, as she said, you know, neither is he giving up because he is used to his luxuries and his comforts. कह रहा है मैं क्यों, you know, I'm not here for. और उसका एक गुस्सा है. मैंने I think पहली दफ़ा ये लड़की बोल भी रही है, you know, उसका. That I thought was good. I think Saba के सारे scenes in that house. I think that house is a good house with Wasim Abbas and Saba and all. वहाँ थोड़ी सी एक believability factor आ रहा है, you know, of the tension and the problems of that house. But good light, good set. Numbers? 6. 6. Marina ji? I wish she had given it more thought. I think she's a capable actress, but somehow she has decided to look prettier than the character, and that is killing the character. So I'll give her a 5. 5. Okay, job. You know, girls use a lot of hair pieces and, you know, wigs and all of that to get longer hair. Like apna Hania has done, huh? She's got long hair in this, and you know, she's actually. I think men should start doing the same thing, and that's how they'll change their look. वो कहते हैं wigs पहनना, extensions लगा रहे हैं. हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? देखिए, they're actors यार. Hair से बहुत change आता है. They're actors. I mean, हमारे यहाँ get up artists Hollywood नहीं में तो होते. बहुत है. वहाँ पे तो हर इंसान एक So different because look हम में लोग आता है. हमारे ये actors फंस जाते हैं. I think Usama is doing a good job because I like his character. It's a fun-loving, teasing, but wanting to go forward, wanting to protect the. You know, there's a lot in his character, but as she says, it's very similar. अब इसमें अगर look ही अपनी थोड़ी change कर लेता ना, हम लोग एक तो we are too involved in our faces. Everyone, the boys are, the girls are, we're too involved in our faces, and there's nothing wrong with that. But Jesus, you're playing a character. I wish you all would understand that. Because once you become that character, then you're not you. You have tons of platforms जहाँ आप अपनी, you know, सब कुछ आप कर सकते हो. But when you're playing a character, please get serious about this. Look where the world is gone and look where we are, and people love our plays. So let's give them more. So why don't boys do that? Lenses भी कर सकते हैं. Lenses कर सकते हैं. They can, you know, because hair is one of. चलो दाढ़ी तो करते हैं. हाँ, लेकिन दाढ़ी जो है ना, अगर कपड़ों का भी स्टाइल, एक पैलेट, अपनी कलर पैलेट को फॉलो करें. Meaning you don't have to be stylized all the time. You can be looking like I'm thinking Usama is that kind of a guy. He wears expensive clothes, but they're rough. So they're a little baggy and all, but they're expensive. And he could be shalwar kameez also. Because you buy the most expensive jeans which are torn also, na? So you know, you can think about these things. We need to start. Our actors need to start taking their part in this business. Seriously. It is not only the director's job. It is not only the associate's job. It is your job. You need to think about your character. You need to know who you are in this thing. And I think the ones who are doing it, look how beautiful those characters are coming out. So I think Usama is doing a great job. I just wish he was looking different to that, but otherwise I'm liking him. So I'd say a 6 for him. 6. Good Yeah. job.